Good morning, students. From today, we are going to start your GK topics. Okay, so first topic is how animals adapt. What is adaptation? Change to survive and thrive. So let's go through your chapter. What is adaptation? Every organism has a unique ecosystem within which it lives. This ecosystem is its natural habitat. आपको पता है ecosystem क्या होता है? Right? जहाँ पर a living organism interacts with non-living organism in the same system and they cope up together, they support each other and they survive together. ठीक है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं थ्रू वन मीन्स और अनदर. This is where the basic needs of the organism to survive are met: food, water, shelter from the weather and place to breed its young. क्या होती है उनकी बेसिक नीड्स? फूड, वाटर, शेल्टर फ्रॉम वेदर, वेदर से उनकी रक्षा करना, एंड प्लेस टू ब्रीड इट्स यंग, उनके यंग वंस का टेक केयर करने के लिए प्लेस. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू अडाप्ट टू देयर हैबिटेट टू बी एबल टू सर्वाइव. सारे ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ता है टू सर्वाइव. An adaptation is a modification or change in the organism's body or behavior over generation that helps it to survive. Now what is adaptation? जो उनकी बॉडी में या उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं over the period of time, over the generation, that is called adaptation. Human adjust to weather by wearing more or less clothes, using heater or air conditioners. हम क्या करते हैं? Being human, if we are feeling very hot, will reduce number of clothing that we are wearing. If we are feeling very chilled, then we wear more and more jackets, sweater, whatever is available, right? In fact, we also use heater if we are feeling very cold, and we use air conditioner and coolers if we are feeling hot. So we try to adjust our surrounding according to our need. Okay, because we cannot change our body. So what we do is we try to adjust our surrounding. But what animals do? The animals adapt with help of changes happening in their body due to their surrounding. उनके surrounding में, उनके environment में जो changes हो रहे हैं, उनके according their body and their behavior gets changed. Adaptation in animals. An animal's environment consists of many different things: the climate, the kind of food plants that grow in it, the other animals that may be predators or competitors. तो उनके सराउंडिंग में क्या क्या होता है? वेदर होता है, ठीक है, जो क्लाइमेट है वहाँ का, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके का फूड उनको अवेलेबल है, किस टाइप के प्लांट्स है या किस टाइप के एनिमल्स को दे आर गोइंग टू ईट, and other animals that may be predators or competitors. जो other animals हो सकते हैं वहाँ पे, जो उनका either they make them prey, कि जो उनका शिकार कर लेते हैं, या सेम फूड के लिए दोनों ही एनिमल की फाइट है, right? So accordingly they adapt. The animal must learn to adapt to each of these factors in order to survive. ये सारे फैक्टर्स के लिए उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, किसी भी एक फैक्टर के लिए अडॉप्ट करके उनका काम नहीं चलेगा. क्लियर? An animal may adapt to its habitat in different ways. It may be a physical or structural adaptation. ठीक है, physical changes हो सकते हैं उनकी बॉडी में, just as the limbs of birds have modified into wings. ठीक है, तो पहले जो बर्ड्स होती थी उनके लिम्स होते थे, ठीक है, जैसे आपके हैंड्स आर्म्स होते हैं, राइट, और लेकिन अब क्या होती हैं उनकी, दे हैव विंग्स. सिमिलरली चीता है, आपने हैव यू सीन द चीता रनिंग लाइक इन वीडियो और समथिंग? तो चीता इज शेप्ड फॉर रनिंग एट फास्ट स्पीड. उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उनके फास्ट स्पीड को सपोर्ट करता है.
It may be in the way the body works in circulating and respiration. ठीक है, जिस तरह से उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जिस तरह से वो ब्रीथ करते हैं, respiration, right? For instance, the gills that fish have enables them to breathe in water. जो fish हैं उनके जो gills हैं वो उनको water में breathe करने के लिए help करते हैं. Or it may be the way the animal behave, whether it is hunting for food or running fast to avoid predators or migrating to other places for food or survival. ठीक है, तो उनके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, जैसे जिस तरीके से वो पहले हंट करते थे, दे माइट हैव चेंज दैट. जिस तरीके से वो बचने के लिए रन करते थे, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, उसके हिसाब से उनके टोज चेंज हो गए. ठीक है, या फिर वो एक जगह से दूसरी प्लेस चले जा रहे हैं फॉर सर्वाइवल एंड फूड. क्लियर? नाउ लेट्स सी द अडेप्टेशन. Adapting to climate, hot desert. In the Australian outbreak, pooled water can be extremely hard to come by. To deal with this issue, the thorny devil has developed skin that can absorb water like blotter paper. आपने सुना है blotter paper, जैसे आपका टिश्यू पेपर होता है वो वाटर को absorb कर लेता है. ठीक है, उससे बेटर होता है blotter paper, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है. ठीक है, वो वाटर को होल्ड कर सकता है. According to scientists, the way the scales on the body are structured, it collects dew and channels it down to the corners of the mouth where the lizard drinks it. ठीक है, तो थॉर्नी डेविल कौन है? इट्स अ टाइप ऑफ lizard फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ पे भी इट्स वेरी स्कॉचिंग हीट. ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है वहाँ पे वाटर पडल्स उनको मिलना. तो व्हाट दे डू इज दे यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब वाटर थ्रू कैपिलरी एक्शन एंड दे ड्रिंक इट. लेट्स सी अ वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस. One of its most fascinating features is how it consumes water. It maneuvers through dewy landscapes and arranges for water to fall on itself. This water runs down micro grooves on its back. By working its jaws like this, the thorny devil is actually working those grooves so the water runs into its mouth. Right. So, did you see what is happening? It's absorbing the water through its skin, and the water is coming to its mouth by capillary action. Okay. Side winding. Now, side winding is a way of moving. It's an unusual method of locomotion that is used by some desert snakes. Not only does it help the serpent keep traction on the shifting sands, but it ensures that only 2 points of animals' bodies are touching the hot ground at a given time. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर सारा आपने सपोर्ट ले रखा है सैंड पे और सैंड स्लाइड हो जाती है तो यू ऑल्सो स्लाइड, बट by using this method they are keeping the traction, so even if the sand shifts they do not get slide down. ठीक है, एंड ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि एट अ टाइम उनकी बॉडी का सिर्फ दो पोर्शन जो है वो सैंड को टच कर रहा है. सैंड इज एक्सट्रीमली हॉट, राइट? ठीक है, डे टाइम में सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो अगर उनकी पूरी बॉडी जो है वो ऑल द टाइम सैंड को टच करेगी तो दे विल गेट बर्न्स. तो इसलिए ये वाला जो मूवमेंट वो यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो हॉट ग्राउंड को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच करती है. लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस. Sidewinding is also a necessary heat coping behavior in the scorched desert. It reduces the body's contact with the hot sand. Clear? So did you see how that snake was moving? That's called side winding. Adapting to climate, cold polar regions. Migration. ठीक है, this is a behavior change. Like side winding was a behavior change. How the snake was usually walks, they slither, but they were side winding. Similarly, the Siberian cranes they migrate away from tundra to tropical countries. ठीक है, वो जब वहाँ पे विंटर आती है तो वो कोल्ड रीजन से वो बाहर आ जाते हैं, वो अब ट्रॉपिकल कंट्रीज पे चले जाते हैं. यू नो व्हाट इज ट्रॉपिकल कंट्री, राइट? ठीक है, तो फ्रीजिंग विंटर्स को वो अवॉइड करते हैं.
Now they also have sharp eyesight, तो वो अपनी sharp eyesight को use करके prey and predators को locate कर लेते हैं. That's a Siberian crane. आपने सुना होगा कि भरतपुर सेंचुरी में काफी Siberian cranes migrate होते हैं. Polar bears. They have thick fur coats that help keep them warm in cold conditions. They have a dense layer of fur close to the skin. ठीक है, और उनके जो फर्स के लेयर है वो टू लेयर्स हैं. उनकी जो आउटर लेयर है वो लॉन्गर फर है और जो इनर लेयर है वो शॉर्टर है और वो उनकी बॉडी को इंसुलेट करती है from the cold. Their skin underneath the fur is black and it absorbs heat from sunlight, helping them stay warm. Okay, look at the polar bear and look at his fur coat. It's very warm. ठीक है, तो again I'm telling you one adaptation points, but all these animals have adopted to all the points. I'm just focusing on one according to my heading. Adopting against predators. Special features. Porcupines are large rodents with coats of sharp spines or quills. They protect them against predators. Okay, so some animals, how they develop adaptation, they get some special features in their body. Okay, so this porcupine, they can release quills on the predators when they are in threat. Now look at those quills of the porcupine. Right? They have like thousands of quills on their body. Clear? Now, camouflage. Camouflage. Camouflage is a type of coloration or pattern that helps an animal to blend in with its surroundings. It is common among invertebrates. Invertebrates means those who do not have proper bone structure. ठीक है, इंक्लूडिंग सम स्पीशीज ऑफ ऑक्टोपस एंड स्क्विड. तो आप कैमोफ्लेज क्या होता है, रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, राइट? हैव यू हर्ड दैट फ्रेज? so that is what camouflage is. It is often used by prey as a way to disguise themselves from predators. तो ये जनरली एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए यूज करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में मिक्स होने के लिए यूज करते हैं. लेट्स सी दिस वीडियो ऑफ एन ऑक्टोपस. Look at this octopus, okay? Now observe closely how he is going to change. See, according to background, his color has changed. How smoothly he has done this shift. Clear? That's camouflage. अडॉप्टिंग फॉर फूड. ऑब्वियसली हमने देख लिया कि नेचर से कैसे अडॉप्ट करना है, प्रेडेटर्स के अगेंस्ट कैसे वो अडॉप्ट करते हैं. अडॉप्टिंग फॉर फूड. Camels have thick lips, so they can eat the prickly desert plant without being injured. The camel's hump stores fat from the food they eat. The camel uses it as nourishment when food is scarce. ठीक है, तो कैमल्स की अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपने कैमल्स देखे होंगे आसपास में, तो उनके लिप्स जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं. तो जब भी वो कांटेदार झाड़ियाँ भी खाते हैं ना, तो दे डोंट गेट हर्ट. ठीक है. Also what they do, they eat a lot of food and they store, they extract every water and water bit and every food fat bit of from that food. सारा वो फैट जो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको वो अपने हम्प में स्टोर करते हैं. ठीक है, तो जब फूड स्कार्स होता है, जब फूड का सप्लाई उनका लो होता है, तो व्हाट दे डू इज दे यूज द फैट दैट इज स्टोर्ड इन देयर हम्प. तो अगर आप कभी ऑब्जर्व कर पाए तो आप देखिएगा कि अगर कैमल को बहुत दिनों से खाना या वाटर नहीं मिला है तो उसका जो हम्प का साइज है इट गेट्स स्मॉलर. ठीक है. Frog. The frog's eyes are positioned on top of its head. It allows a frog to eat large prey. ठीक है, उसकी आईज जिस तरह से पोजीशन है ना, उसको अपने प्रे को कैप्चर करने में इट बिकम्स इजी. वो बहुत इजीली उनको देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है. इट्स टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी. उसकी टंग कैसी है, लॉन्ग एंड स्टिकी. तो विदाउट इवन मूविंग वो अपनी जगह से बिना हिले भी अपने प्रे को कैच कर सकता है. What if animals cannot adapt? What happens if they are failed to adopt?
If organisms cannot adapt to changes in their ecosystem, they may move to another location. If they will not move, the species may become threatened, endangered, or extinct. Here are a few examples of the species who are endangered or extinct. Yangtze River dolphin, West African black rhinoceros, monarch butterfly, Gigantopithecus. That one was the largest ape of the world, and he could not adapt to the changes in food in his habitat. That's why he became extinct. Cool. Now, your explore work for the day is find out who gave the theory of adaptation to the world. Okay? The work is who gave the theory of adaptation to the world. Thank you. So here I close the topic adaptation. Now what we are going to do is I'm going to send the page from your book to you. आप उन सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे यू सॉल्व दैट बेस्ड ऑन द क्लूज यू आर गिवन and share it with me. All the best.